एलिवेशन है और ये जो हमारा था कि ये जो है एक्सिस एक्स आपका बनेगा, ये एक्सिस आपका वर्टिकल वाई बनेगा और प्लान में जो आपको चौड़ाई दिखती है वो आपका एक्सिस जेड बनेगा। यानी कि टोटल जेड एक्सिस आपका 60 है, एक्स एक्सिस आपका 130 है और वाई एक्सिस आपका 60 है। दोस्तों मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो लाइन आपको बनानी है सारी पहले लाइट लाइन बनानी है। आप एच पेंसिल यूज कर सकते हो। ये जो है हमारा एक्स एक्सिस, उसके ऊपर जो आपको प्रोजेक्शन लेना है दैट इज टोटल 130। तो यहाँ से आप 130 मार्क करके वर्टिकल कितना है तो वर्टिकल 60 है जो मैंने आपको बताया था। तो टोटल डायमेंशन आपका ये हो जाएगा 60। दूसरा ये जेड एक्सिस पे आपका होगा 60। अब दोस्तों एलिवेशन को हम देखते हैं तो दिस इज इक्वल टू 20, दिस इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले हम लोग यहां से वो 20 वाला प्रोजेक्शन हम मार्क करेंगे। अब दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ से 30 और ये है 10, यानी कि दोनों साइड 40-40। तो ये डायमेंशंस आपका यहाँ पे हो जाएगा 40 और ये डायमेंशंस यहाँ पे हो जाएगा 40। तो इसको अगर हम लोग प्रोजेक्ट करें तो जैसे मैंने आपको बताया अभी आपको यहाँ से लेना है 40, सिमिलरली यहाँ से भी आपको लेना पड़ेगा 40। यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन बनाओ, फिर यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाओ। यानी कि दोस्तों हमने ये प्रोजेक्ट किया, ये लाइन प्रोजेक्ट किया। अब वर्टिकल दिस इज इक्वल टू 20 और ये भी लाइन यहाँ पे 20 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो चारों पॉइंट्स हमको मिले वहाँ से हम लोग वर्टिकल्स बनाएंगे और उसकी जो लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू 20। अब दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे ये हम लोग यहाँ तक आ गए। अब ऊपर जो है 20 का सिलेंडर है, उसका डायमीटर है 30। तो यहाँ पे 30 डायमीटर का सेंटर पे एक सर्कल बनेगा और आप देखोगे यहाँ पे ये 50 और ये डायमेंशन आपका 60 है। ये इसका सेंटर मिल गया। हमको कितना बनाना है 30 का डायमीटर, यानी कि हमको 30 बाई 30 का पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप मेजर करो, दिस इज 15, यहाँ पे 30। सिमिलरली ये जो प्लेन है वहाँ पे भी आपका 30 बाई 30 आएगा। देखा जाए तो कंप्लीट हमको यहाँ पे 30 बाई 30 का पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। देखा जाए तो दोस्तों ये सिलेंडर बनाना बहुत हार्ड है। सब कुछ बनाने के बाद पूरी ड्राइंग को अगर कोई बिगाड़ता है तो ये सिलेंडर है। अब ये मेरा पूरा पैरेललोग्राम बन गया 30 बाई 30। सिलेंडर की हाइट जो दी है दैट इज इक्वल टू 20, यानी कि ये जो पैरेललोग्राम है हमको लिफ्ट करना पड़ेगा अप टू 20। वो यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों ये आपका ऊपर का भाग आपको मिल गया। अब आपको फाइंड करने उसके सेंटर्स। तो यहाँ से जो सेंटर है दैट इज 1.5। सिमिलरली इसका जो सेंटर है वो आपको मिलेगा 1.5। इसका जो सेंटर है यहाँ पे मिलेगा 1.5 और यहाँ पे जो आपका सेंटर है दैट इज इक्वल टू 1.5। सबसे पहले आप क्या करोगे, दिस इज कंसिडर एज अ सेंटर 1 और रेडियस आपकी इतनी होगी, यानी कि यहाँ से इतनी आपकी रेडियस होगी। दिस इज C1। ये पॉइंट से आप बनाओगे तो दिस इज C2 एंड रेडियस 2। फिर यहाँ से आपका ये डायगोनल बनेगा सेंटर 3 एंड सेंटर 4। ये आपका सेंटर 3 है और ये आपका सेंटर 4 है। तो दूसरा आपको जब भी सिलेंडर बनाते हो तो एक ध्यान रखना, सर्कल बनाते हो तब उसको आप लाइट या डार्क कुछ कर नहीं सकते, आप अच्छी तरह से पहले से ही फिनिशिंग करना पड़ेगा। तो दिस इज कंसिडर एज सेंटर 1 एंड रेडियस 1।
तो आप अपना सर्कल ड्रॉ कर लो। फिर यहाँ से इतना सा लेके आप अपना सर्कल ड्रॉ करो। फिर यहाँ से इतना सा आर्क लेके सर्कल ड्रॉ करो। सिमिलरली फाइनल पॉइंट आपका यहाँ पे है। तो इस तरह से आपको ये ऊपर का सर्कल मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो सेंटर है वो आपको डाउन करना पड़ेगा 20, यानी कि यहाँ से ये सर्कल आप डाउन करो 20। तो यहाँ से आप 20 नीचे आ गए, यानी कि सेंटर 3 ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे। सिमिलरली सेंटर 4 को आप ट्रांसफ़र करो यहाँ पे और वो हो जाएगा आपका 20। वो दोनों जगह पे आपको एक आर्क लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से आप आर्क लगाओगे यहाँ से इतना सा। फिर सेंटर नंबर 4 जो ट्रांसफ़र किया वहाँ से आप एक आर्क लगाओ। दोनों साइड पे ट्रांसफ़र करने के बाद सेंटर नंबर 2 है उसको ट्रांसफ़र करो डाउन 20। तो ये समवेयर यहाँ पे आता है। तो वो ध्यान में रखते हुए रेडियस आपकी होगी ओरिजिनल यहाँ तक की, और ये सेंटर यहाँ पे होगा। तो ऐसे करके आप एक आर्क बना लो। दोस्तों अभी यहाँ पे टेंजेंट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो योर सिलेंडर विल लुक लाइक दिस। दूसरा हम लोग ये करते हैं, ये पोर्शन आप बना लेते हैं। तो ये जो आपका है 20, तो यहाँ से आप मार्किंग करो 20, यहाँ से हो गया 20, और उसका जो डेप्थ है दैट इज इक्वल टू 30, यानी कि यहाँ से आपको अंदर जाना है। दिस इज कंसिडर, दिस लेंथ इज 30। यहाँ से आप 30 मेज़र करके इसके साथ जोड़ लो। यहाँ से 2 वर्टिकल दिखेंगे, यहाँ से आपको एक हॉरिजॉन्टल दिखेगा। अब यहाँ पे आपको वी शेप दिया हुआ है और लेंथ है हमारी अगेन 20। तो यहाँ से 20 है, यहाँ से 20 है। दोस्तों हमको पूरा वी शेप दिखेगा नहीं, और उसकी जो डेप्थ हमको दी है दैट इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये सेंटर लेके एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। यहाँ से एक पैरेलल लाइन आपका बनेगा। वो जो पॉइंट आपका कितना होगा 30। तो यहाँ से आप 30 मेजरमेंट ले लो समवेयर हियर। इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये आपको यहाँ तक ही दिखेगा। अब दोस्तों जो हमारा आंसर है उसको मैं पूरा डार्क कर रहा हूँ, जरा ध्यान से आप देखिएगा। आपको वही चीज़ डार्क करनी है जो आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों ये हमारा फिनिशिंग था। फिनिशिंग आपको बहुत ध्यान से करना है। और ये जो हमारा था एक्स डायरेक्शन, वहाँ से ये प्रोजेक्शन हमको दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप ये चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
What's up, this is Manas and this is going to be the second tutorial in the series of isometric drawings. Okay, and here is the problem. This is the front view and this over here down below is the top view of a certain object. Okay, we don't know how this object looks, but we're going to figure out by constructing this over here. Okay, so what we're going to do is we are going to mix this the front view and two view, and we're going to create a 3D view out from it. Okay, it's popularly known as the isometric view, in which all the three dimensions of an object are clearly visible and can be measured directly from it. That's what you call an isometric view. Fine. So we will have a different approach to this problem. I had a different approach in the previous tutorial, if you have seen that. And if you haven't seen the previous tutorial, you should definitely go back and see it. Anyway, so we're gonna right now focus on this one, front view, top view, and let's start by initially drawing a line over here. Okay, here we have a line. Fine. Then again, I'm going to draw an isometric axis that has to be done at an angle of say 30 degrees, right? This way. Fine. Now the next thing to be done is we've got to have one more isometric axis. So we're going to draw it from this point, and again randomly I'm choosing any length, but the angle has to be 30 degrees. Fine. Alright, so this was the second isometric axis. This one is for length, this one is for breadth, and there is going to be one more, and that's going to be for height. Okay, now if you look at this figure in the top view, you can clearly see that this length over here if I say this breadth over here is 100 and this length 25 plus 25 plus 25, and this should work out as 75 in totality. So guys, we can clearly say that the overall length of this object is 75 and the overall breadth of this object is 100. So what we're going to do is we're going to fit in this 75 along this axis and this 100 over here along this axis. So let's do this. Why wait? 75 along this axis. So yeah, that's pretty much okay. So this length over here corresponds to 75 millimeters. And this next thing that we've got to do is 100 millimeters. So this I suppose is 100 millimeters. Okay, so this is 100 millimeters in fact. Okay, so what we're going to do right now is we'll create a box of having a length of 75, having a breadth of 100, and having a height of, this height can be figured out from this front view. You can clearly see that the height of this object is 48 millimeters. Okay, so let us initially construct this base, and I'm going to have this. You can keep your mini drafters along this line, and then make sure that you tighten the screw. Then go from this point to this point. You'll get a parallel line, an absolutely parallel line. Okay, same stuff has to be repeated over here. Also, you can keep your drafters along this line. Make sure that the screw is tightened. Move to the next point over here, and here you have it, the base of the box. Now all these 4 points will be elevated or given a height of 48 millimeters, something like this. Let me do this. Let me show you. This is going to be 48, right? All right, so I'm going to copy this over here. Also, you can do this stuff with the help of a drafter pretty easily and in pretty much the same time. Okay, that's it guys. Now what we're going to do is we will join all these points. Okay, starting from this one, this, that's it. Okay, in order to avoid confusion right now, these are the edges which will not be visible practically in this isometric view, so I'm going to delete them, okay, for proper visualization. Okay, so what happens is we're going to start off by drawing this front view. You can clearly see this seems to be some kind of a step. Alright, so this step is going to have a height of 16. You can clearly see this over here. Okay, I'm going to zoom on it. This is going to be 16, and then over here this length over here, so this corresponds to, you can clearly see over here, this corresponds to 25. Okay, so 16, 25, again 16, and this length over here, this guy, this length from this point to this point, this again is how much? 25, and then back at the top. Okay, 16, 25, 16, 25, again 16, and then this is obviously 25. Okay, so we are going to draw this profile from the front, and let's see, we are going to figure out eventually as to how the object looks. So let's do this quickly. So
I'll go 16 steps above, and then what? This is going to be 25. All right, then again 16 above, wrong, again 16 above, this way, yeah, pretty much, and then again over here 25, then again above this way, okay, 16, pretty much. Okay, that's it guys. So this profile, this front view sort of a profile has been done, and now we have to figure out about this. Okay, so the front view is done, and we need to worry about this. You see this line over here, from this point to this point, the length of this line is going to be 100 minus 36. So 100 minus 36 is equal to 64. So this length over here from this point to this point is 64. Yeah. So what we'll be doing is we'll try to draw a line from this point over here. So you can keep your drafters along this line, tighten the screw, then keep your drafters along this point, and then draw a line of 64 millimeters. I'm going to show you how you need to do that. Okay. That's it. That's the way. Okay, and you can clearly see that this line over here is absolutely parallel to this line over here. So again, the same stuff has to be repeated, and this length is in fact 50 millimeters from this point over here to this point. So let's again draw a line, and should be parallel to this line over here. Okay, that's it. Okay, so we have drawn this profile. Okay, we have drawn this profile. Okay, now we need to project these so-called points in the backward direction. Okay, how can that be done? Again, it appears as if there is only one point over here, but when you look over here, there are actually 2 points, one over here and the other one over here. Okay, this line, I'm going to draw this line again from this point, this way, yeah, and again from over here also, from here also, and from this point, and from this point. Alright guys, that's it. So that's what you call a step. And the next thing to do, it's pretty simple now. You need to join this stepwise, and then here you have the 3D view of this 2D view. This is the 2D view, and this over here is what you call the 3D view. Now guys, there are few modifications and there are few enhancements that you can carry out. I'm going to show you what else can be done. You can actually have an edge pencil right now. Now initially this whole drawing was made with the help of a 3H pencil. Okay, so make sure you are using the right pencil. And finally, in order to darken or show the outlines with the help of H pencil, okay, in order to make this look a bit more realistic, we're going to use an edge pencil. And for that, please watch this carefully. I'm going to darken the portion which is going to be visible clearly. So let's draw them. That's it. Keep on watching, and you're going to eventually realize as to how this object turns out as. It's pretty good. It's looking very nice now, isn't it? Keep on watching guys. This is really fun stuff. And what's left? This portion over here is left, and let me darken this portion. Alright, what's next then? This portion over here and this portion over here, and let us darken them also. Okay, and if you want to clearly see the so-called isometric axis, so this guys over here is an isometric axis, this over here is an isometric axis, and this over here is also an isometric axis. You can refer to them as X, Y, and Z axis. And if you want to check the angle between them, they should work out as 120 degrees. So this over here is 120,
and let us check further. This angle is also 120. Alright, and this should also figure out as 120 degrees. So as I've already told you that isometric axis constitute an angle of 120 degrees between them. Alright, and any line which is parallel to an isometric axis is an isometric line. So you can clearly see that this line over here, this line over here, this line over here, this over here, this one, these are all the lines which are parallel to this isometric axis, and hence they are an isometric, they are what you call isometric lines. Similarly, parallel to this isometric axis, you're going to have this line, and several other lines. Alright, so these are what you call isometric lines. So this whole family of isometric lines can be composed together to form an isometric view. Alright, the family of isometric lines make an isometric view. That's what I'm talking about. Alright, so guys, that was all from my side, and if you have any doubts or queries, feel free to ask or write them down in the comment section below. This is Manas Patnaik signing off. Take care, bye bye, and keep drawing. Hi guys, what's up? This is Manas, and today we'll be dealing with isometric views. Now guys, I've been getting a lot of messages to develop content on isometric views and isometric projection. So the wait is finally over, and this is going to be tutorial 1. So what exactly does this isometric projection or isometric view mean? Well, here is the answer. Isometric projection is a type of pictorial projection in which the 3 dimensions of a solid are not only shown in one view, but the actual sizes can be measured directly from it. And guys, there is a lot of confusion among students, I've heard. I mean, so what is the difference between an isometric view and an isometric projection? Well guys, here is the answer. To avoid confusion, the view drawn with the true scale is called isometric drawing or isometric view, while that drawn with the use of an isometric scale is isometric projection. So so any view that is associated with, or any view that is drawn with the help of a true scale is an isometric view. Okay, and whereas when you use an isometric scale, the size is reduced slightly. Okay, and that particular view is in fact what you call an isometric projection. Alright, so that was the basic difference between isometric view and isometric projection. So I'll be doing an isometric view tutorial this time around, and we'll be using all these dimensions, the true scale, and we'll be drawing this isometric view, the so-called 3D view, with the help of these true dimensions. Okay, so isometric, the simple measure of the simple meaning of isometric is equal measure. Alright, so there are 3 axes. So this is how the isometric axis is placed, and this axis over here is for length, this axis over here is for length, this one is for breadth, and this one is for height or depth. Alright, and if we can show you this, we can draw a horizontal line through the intersection point of all these 3 axes, you'll realize that this angle over here works out as 30 degrees. Okay, and this angle also works out as 30 degrees. Alright, so now let's begin our quest for drawing the isometric view, and the figure is this one over here, and let us see and let us figure out how much the length of this overall object is. Okay, alright, so you can clearly see that this over here is the front view and this over here is the top view. In front view you can clearly see the length and the height. So the length is 56. Alright, this is 56 from here to here, this is over here is 20. And in the top you can clearly see the length, that is 56, and breadth is 32. So what we're going to be doing is, initially we'll be drawing this so-called horizontal line. Alright, and somewhere around this line we'll have to make a point, and then the length is going to be along this axis over here. Okay, so the length has been taken as 56 millimeters, so I'm going to write 56 over here at an angle of 30 degrees. Alright, so please watch this carefully. Let me show you this angle. That's 30 degrees. Next thing is to place breadth along this isometric axis. Alright, so the breadth has been given to us as 32 millimeters. So let's do this quickly. Done.
Okay, the next thing to do, guys, is to make use of a roller scale, or you can also make use of a mini drafter. And I would strongly recommend you guys to make use of a mini drafter, because it's going to be super fun and it's going to be pretty quick with the help of a drafter. So what we're going to do is we'll place our mini drafters along this line, or one scale of a mini drafter along this line. We'll tighten the screw, and then we'll go ahead and take this point and we'll draw a line. Again, this, needless to say, this is a 56 millimeter long line. All right, then again we'll keep our drafters along this line over here. We'll tighten the screw, and then we'll move ahead, and then again we'll draw a line. Obviously the length of this line will work out as 32 millimeters. Okay, so the top view of this overall scenario has been drawn in the isometric way, okay, with the help of isometric lines, obviously. Now if you watch this carefully, in this front view we have this platform, okay, the foundation, and this foundation is of height 8 millimeters. So what we're going to do is we'll go 8 millimeters above from each and every point, this one, this one, this one, and this one. So let's do this quickly. 8 millimeters above. All right, 8, that's it. Now I'm going to copy this 8 millimeters from this point, 8 millimeters from this point, and 8 millimeters from this point. Now all these points, we're going to join all these points with the help of this line over here. Let's just join them. Well, that's it. And now for clarity, for better visualization for you guys, I'm going to delete these so-called edges which will not be visible in fact, okay, in this view, isometric view. Okay, the next thing to do is to draw this top view over here. Okay guys, we are going to start off from this point over here. We're going to go 8 millimeters along this direction, and then we're going to go, this is how much, let us see, this is if I can show you, this length over here is actually 16. Yeah, from this point to this point, this is actually 16. You can clearly see this. Okay, I'll delete this right now. Okay, fine. So we're gonna go 8, and then we're gonna go over here 16, and then back over here. Okay, so watch this carefully. 8 steps along this direction, 8 steps. That's it. And then 16 millimeters in this direction. Okay, and then here 8 millimeters. Okay, that's it guys. So this profile has been made, fine, and now we're going to go for this profile over here, and this is going to be 8, this is going to be 8, and this is going to be, from this point we're going to come over here for 16, and then back to 8, 8, 16, and 8. So this is the philosophy with which we're going to be working. 8, okay, then over here we're going to go 16 steps, 16 millimeters, and then over here, okay, 8 millimeters. So this profile is over, this profile is over. Now let's worry about this profile, this guy over here. So in order to locate this point, what I'll do is, please watch this carefully, so I'll be drawing a line over here, okay, at a distance of 10 millimeters randomly. So let's do this quickly. From this point, all right, so I'm going to be drawing this line. All right, please keep on watching this carefully, don't miss the action. Something like this. Okay, suppose you have drawn this line, just for example, okay, this line we have drawn. Okay, fine. Now somewhere along this line, at a distance of 20 millimeters, we are going to have this point. All right, so let's have this point. That's it. This was the point which was needed. All right, so I'm going to chop off this line right now. No, not exactly. All right, now let's move in this direction.
this direction you see, this is 12. So we're going to go 12 in this direction at the rate 12. Alright. Then we have to move in this direction. This is 16. Alright, this is 16. All these stuff can be done with the help of a drafter. Okay. Then again, down 12 steps, 12 millimeters. And back to where we started. This was the point. Alright. And now let us delete this line from this point and from here also. So this overall top view has been created over here. The only thing left is to make use of this front view. Now you can clearly see that these are the 4 points over here. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 and 4. These 4 points are absolutely lying over here, and the height of these 4 points are, this height over here is somewhere around 12 millimeters. So because this is 20 and this from this point to this point is 8, 20 minus 8 will give you 12. So this height has to be 12. Same stuff for this one also. This is to be 12. Alright. So we're going to go 12 above from each and every point over here. Alright. Now I'll copy this. You can make use of a mini drafter for this. And now the next thing to be done is to join all these points. That's it. The same stuff for this end also. So let's go above. I already have copy this one, and this one. And now let's join all of them. Starting from this. Done. Bravo. Perfect. Alright. Next thing to be done is to look for this guy. Now this, okay, all these points were above. We went upstairs. Alright. Now this appears as if this is some kind of a rectangular hole, a 16 by 12 rectangular hole having a depth of 8 millimeters. Alright. Now this line you see over here, this actually is an edge. And you can clearly see that there are two lines. Okay. Two broken lines rather. So these two broken lines refer to 4 edges. There are 2 edges, one at the front and one at the back. This corresponds to only one edge over here. And then over here we again have 2 edges, one at the front, one at the back. So these edges cannot be seen directly from the front, and hence these edges cannot be seen directly from the front, but they have to be given some respect, and that respect is with the help of these so-called broken lines. Alright. So what we're going to do is, we are over here. I'm going to show you where we are exactly right now. We are over here, and we have to go down below 8 millimeters from each and every point. This, and this. Alright, so let's do this quickly. Down below by 8 millimeters. 8. That's it. Now, again, we have to repeat this for this point, for this guy, and for this guy. Okay. Just as you see this rectangle above, so there is going to be a rectangle below also. Let's make this rectangle. Okay guys, the drawing is almost done, and the next thing that I'll be doing, it's going to be very interesting. I'll be darkening all that portion which is going to be visible. Alright, so please watch this carefully. Okay. Okay, let's keep on moving. And you can make use, initially the drawing that I've prepared, you can make use of a 3H pencil. Okay, it's going to be very light, and then finally you can, with the help of an H pencil, you can darken the portion which is going to be visible. Okay, so these are the final touches that I'm giving to my drawing. Alright, then we have to go for this guy. Alright, let's go for this one also.
All right, so what's left? This is left. All right, some more final touches. This guy. Now guys, there is this correction that I want to make. In the orthographic view, you have this as a broken line. I'm going to show you what it exactly is. Let us just use this. What was the name? It was JIS, I suppose. All right, so even this is a hidden line. Okay, so there is an edge which cannot be seen from the front, and this has been hidden. All right, so this is that edge. Okay, so please make this correction, guys. Mistakes do happen. I mean, we are humans. All right, so let's move further, and I don't know if anything is left or not. You can clearly see that this also has to be made dark, and we can go for this one also, from this point to this point, and from this point over here to this point. So ultimately, this is what you call the isometric view, and it has been drawn to true scale, and each and every dimension can be worked out by with the help of a simple scale. You can keep your scale over here and work out the dimensions. All right, and if you want to have a more realistic view, I'll show you how to have it. So finally, I've discarded all those lines, and this is your isometric view. So guys, now you can confidently say that you know how to make a 3D view. All right, so that's it. All right, so guys, that was all from my side. If you have any doubts or queries, do write them down in the comment section below. This is Manas Patnaik signing off. Take care, bye bye, and keep drawing. बना हुआ है ये आपको कितना दिया देखो तो दिस इज 20 18 18 18 प्लस 18 36 36 प्लस 20 इज 56. ओके, तो 5.6 सेंटीमीटर का ये अपना क्या है बेस है, जो कि कम्प्लीटली बेस तो नहीं है क्योंकि बीच का ही है जो 20 ये अपना बना हुआ है, बाकी जो है पीछे तरफ कहीं बनी हुई है. ठीक है, तो ये जो है ये वाला और ये वाला जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है. ठीक है, और ये जो इंक्लाइंड है ना तो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखेगा. ओके, तो आपको मैं यहाँ पे बना करके दिखाऊंगा वैसे कैसे ये बनेगा. और ये जो आपको बना हुआ है जो हाइट आपको दिया हुआ है दिस इज ऑफ 16 mm आपको हाइट दिया हुआ है. और ये जो बना हुआ है देखो कहाँ बना हुआ है, इस बेस के ऊपर बना हुआ है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 8 mm. ओके, दिस इज 16 mm, दिस इज 8 mm. 8 mm के हाइट पे जो है आपका ये वाला पार्ट बना हुआ है. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. देखो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये अपना वर्टिकल लाइन हो गया. इस पॉइंट से 30 का दो लाइन को हम मार्क कर दिए हैं. जो फ्रंट व्यू रहेगा मैं उसको कंसिडर करूँगा, तो फ्रंट व्यू का जो भी बेस रहेगा वो इसके पैरेलल होगा, और जो बेस के 90 डिग्री बनेगा वो इसके पैरेलल बनेंगे. अगर ये मेरा फ्रंट व्यू है तो इतना क्या साइड व्यू हो जाएगा जहाँ पे ये अपना बेस और ये अपना हाइट हो जाएगा. और टॉप व्यू में क्या होगा, एक तरफ ये होगा एक तरफ ये होगा, मतलब ये जो लाइन्स जो होंगी टॉप व्यू से क्या होंगी आपस में 90 डिग्री बनेंगी. ओके, तो 30-30 कई बार बच्चे पूछते हैं कि 30-30 अपन क्यों लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 30-30 लेने पे क्या होगा, जो व्यू आपको देखेंगे, जो फ्रंट व्यू रहेगा टॉप व्यू रहेगा साइड व्यू रहेगा, जो भी आपको व्यू यहाँ पे दिखने वाला है सब प्रॉपरली दिखेगा आपको, है ना, इक्वली सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा. इसलिए हम क्या करते हैं 30-30 पे ही इसको ड्रॉ करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. देखो आप कितना दिया आपको यहाँ पे बेस, जैसे 56 mm, और 56 mm में सिर्फ ये 20 ही है जो अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. कहाँ बताओ तो यहाँ पर, बाकी को जो है छोड़ देंगे, है ना. देखो कैसे बनाएंगे. अब सिंस यहाँ पे जो अपना लाइन यहाँ पे ड्रॉ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे एक स्केल पे यूज़ कर लेता हूँ. ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज 5.6 सेंटीमीटर्स. ओके, ये अपना हो गया है. तो ठीक है, तो अगर आप देखो तो 5.6 मतलब यहाँ से कितना अपन आगे जाएंगे, 1.8 आगे जाएंगे. ठीक है, तो 1.8 मतलब यहाँ से अपना हो गया 0.6, यहाँ पे अपना हो गया 1, दैट इज़ 1.6. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 आगे आएंगे. यहाँ से जो हम क्या देखो ये अपना कौन सा पॉइंट है 3.8 है, तो 3.8 से हम कहाँ तक आएंगे 1.8 तक आएंगे. ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अपना डार्क होगा. ओके, ठीक है, इसको जो यहाँ पे डार्क कर लेता हूँ, और एक बार 5.6 को भी जो यहाँ पे अपन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक का है. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है. ठीक है, ओके, तो ये अपना 18 हो गया, यहाँ से यहाँ तक अपना जो है 18 है. ठीक है, ओके. अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिया हुआ है हाइट, बताओ कितनी दी है यहाँ पे अपने को 0.8 सेंटीमीटर का हाइट दिया हुआ है.
तो हाइट को जो आप यहाँ पे दिखा देते हैं पहले। ओके, इस एंड तक अपन जाएंगे और यहाँ से अपन 0.8 ऊपर तक आएंगे। ये अपना 0.8 का हो गया है। ठीक है, इसको जो मैं हल्का सा मार्क कर ले रहा हूँ मैं। ओके, ये भी अपना हो चुका है। अब देखो ये कितना पीछे गया हुआ है, दिस इज 32 mm पीछे गया हुआ है। ओके, तो ये सब कुछ जो अभी फिलहाल मैं लाइट बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो 32 आपको जो दिया हुआ है ना, ठीक है, टॉप पे आपको दिख रहा है कि नहीं, टॉप 32, तो 32 यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा 32 ही आएगा। तो इसके पैरेलल जो है, पहले मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। अब 32 जो है मैं इसको यहाँ पे रख करके इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक अपन 32 रहेगा ये। ओके, ठीक है, यहाँ से भी लेके अपन 32 जो है पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये अपना होगा 32। ओके, फिलहाल जो सब कुछ मैं लाइट बना रहा हूँ, जो आखिरी में एग्जिस्ट करेगा बस उसी को अपन डार्क बनाएंगे यहाँ पे। डार्क मतलब HB पेंसिल। ओके, तो इसको भी मैं यहाँ पे टाइट करके यहाँ पे 0.8 सेंटीमीटर जो है मैं यहाँ पे आगे ले आता हूँ। ये अपना हो गया है। ठीक है, फाइनली हम क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ लेंगे। ये देखो अपने जुड़ गई है। ठीक है, इसको भी जो है अपन थोड़ा सा आगे ले आते हैं। ओके, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको आप, इसको भी जो है यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा अपन दिखा देते हैं। ये अपना हाइट बन चुका है। जो भी ये जो हाइट बनी हुई ना, जिसके ऊपर ये बना हुआ है, उसको जो मैं यहाँ पे यहाँ ड्रॉ कर चुका हूँ। ठीक है, ओके, अब देखो क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ से यहाँ टाइट कर दिया। ये जो यहाँ बना हुआ है इसको जो है मैं ऊपर तक ले आता हूँ। इसको भी जो है मैं यहाँ तक ऊपर तक ले आता हूँ। यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ पे जो अपन यहाँ के स्केल से इसको जो है आपस में जोड़ लेंगे। देखो ये आपस में इसको जोड़ गया है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे ना, तो देखो ये कितना पीछे से आया हुआ है, दिस इज 16। ठीक है, तो यहाँ 16 आएगा, यहाँ 16 आएगा, फिर यहाँ से अपन कुछ करेंगे। देखो क्या करेंगे, 16 पहले अपन यहाँ से आगे आते हैं। ओके, मान लो मैं कहाँ पे रखा हूँ, 4 पे रखा हूँ। ठीक है, तो 4 से 1.6 यहाँ तक आएगा। ठीक है, इसको अपन यहाँ से यहाँ तक इसको डार्क कर लिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को मैं यहाँ भी दिखाऊंगा, है ना, तो क्या करो, चाहो तो यहाँ से भी इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 1.6 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो इसको जो है थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा डार्क रखता हूँ मैं। यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अब देखो अगेन यहाँ से जो है 90 डिग्री में यहाँ पे गया है कितना, 12 mm। तो इसके 90 डिग्री मतलब ये वाला हो जाएगा इसका। ठीक है, तो डाफ्टर को थोड़ा लूज कर लो, यहाँ पे रखे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे रख के जो है अपन 12 mm, ठीक है, यहाँ से अपन 12 mm आगे मूव करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको जो अपन थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होगा, वैसे 12 mm आपका आगे आएगा। तो मान लो उसको कहाँ पे रखा हूँ, 7 पे रखा हूँ, तो 7 से अपन कहाँ तक आएंगे, 5.8 तक आएंगे। ओके, तो ये अपना हो गया 1, तो 1.2 हो गया ये। ओके, ये अपना हो गया है। फाइन, अब ये जो एंड है, देखो ये जो एंड है इसको हम क्या करेंगे, इससे जोड़ लेंगे। वैसे ये वाला एंड जो है इससे जुड़े आएगा। तो क्या करना, यहाँ पे रख करके इसको यहाँ पे आपस में इसको ज्वाइन कर लो। इसको भी जो है आपस में इसको इसके साथ जो है ज्वाइन कर लो। ज्वाइन हो गया आपको ये, बढ़िया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो है ये बेस की अपर टॉप सरफेस से बना हुआ है ना, तो इसको आप जो है नीचे लेके आ जाओ। ये अपना नीचे आ गया है। अच्छा ये बताओ कितना नीचे आएगा, ये अपना 0.8 नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको जो यहाँ तक इसको ज्वाइन कर लिया। वैसे यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा। ये तक कितना आएगा, 0.8 नीचे आएगा। तो उसको जो है यहाँ तक अपन इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ड्राफ्टर को जो है ऐसे इसको पकड़ो। ठीक है, इनको जो है आपस में ज्वाइन कर लो। ओके, यहाँ ज्वाइन हो गया ये, और ये भी जो है आपस में इसके ज्वाइन कर लिए। हो गया ये। अब स्केल पकड़ना, इन दोनों पॉइंट्स को भी जो है आपस में उसको ज्वाइन कर लो। देखो यहाँ तक का जो अपना ये बन चुका है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जो टॉप सरफेस बना हुआ ना ये वाला पार्ट, इसको अपन देखेंगे जो कि यहाँ बना हुआ है।
अब यहाँ पे देखो तो देखो ये कितना है, इसकी थिकनेस दी है अपने को 8 mm, ठीक है। और देखो ये कहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है। तो अगर ये 8 mm है और ये अगर अपना ये 56 mm दिया हुआ है, तो 56 को अपन जब 8 से माइनस करेंगे तो इट विल बी 48। 48 का मतलब ये कि अपना ये 24 का होगा, ये अपना 24 mm का होगा, है ना। यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है, दिस इज 24 mm, दिस इज 24 mm, और बीच में क्या मिलेगा 8 mm का एक गैप रहेगा जहाँ पे क्या है ये हाइट बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन दिखाते हैं इसको। देखो यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ है, तो यहाँ से अपन 2.4 पीछे आते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखा, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 2.4, ओके। वैसे अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे रख के अपन क्या करेंगे 0.8 जो है आगे मार्क कर लेंगे। सॉरी, ये अपना हो चुका है। अब देखो इसकी हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट है देखो तो कितना, ये 16 mm है, ठीक है। 16 mm चाहिए, ऊपर गया हुआ है, ओके। और कितना आगे देखो, ये कितना अपना आगे है, यहाँ से मालूम नहीं पड़ रहा है, ये अपना कहाँ मालूम पड़ेगा, यहाँ से मालूम पड़ेगा। दैट इज़ ये जो आगे आया है दिस इज़ 14 mm, ठीक है। 14 mm आगे आया हुआ है, तो ठीक है। यहाँ पर जो है इसको यहाँ से ऐसा अपन टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद यहाँ से जो है अपन 14 mm आगे आ जाएंगे, ठीक है। 14 मतलब यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप हल्का डार्क कर लो, बस यहाँ भी जो रहेगा आपका ये 14 mm ही रहेगा। इसको लेकर के अपन यहाँ पर डार्क कर लिए। अब यहाँ से अपन कितना ऊपर चढ़ेंगे, दैट इज़ 1 पॉइंट, देखो देखो ये तो अपन आगे यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। हाइट कितनी दी हुई, दिस इज 16 mm, तो यहाँ पे जो है अपन 16 mm जो है ऊपर चढ़ेंगे अपन। तो पहले इसको अपन टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे टाइट हो गया है। अब सभी पॉइंट्स हम क्या करेंगे 16 mm ऊपर चढ़ेंगे, तो यहाँ तक आएगा आपका ये वाला, ठीक है। वैसे यहाँ भी आ जाओ, कहाँ तक 16, तो ये अपना हल्का ही रहेगा क्योंकि अपना दिखेगा नहीं, ओके। तो यहाँ भी आ जाओ 16, अपने यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आ जाओ 16, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपको दिखा हुआ ना, इसको जो है आप इसको टाइट कर लीजिए, मतलब डार्क कर लो, है ना। स्केल से आपस में जोड़ करके इसको आप डार्क कर लो, क्योंकि ये टॉप एज है ना। टॉप का जो आपको रहेगा ना सरफेस आपको दिखेगा, ठीक है। ये अपना हो गया है, ठीक है। आई बिलीव आपको ये सब कुछ क्लियरली समझ में आता होगा जो बना रहा हूँ मैं। उसके बाद देखो क्या किया है वो, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो ये जो इसका जो नीचे का जो बेस दिया हुआ है, यहाँ से अपन 10 mm आगे आएंगे, और यहाँ से अपन जो करेंगे 10 mm आगे आकर के यहाँ पे पॉइंट लेकर के इसको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ से कितना वो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन देख लो, यहाँ पे रखिए इसको, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेंशन कर लिए दिस इज़ 14, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ तो यहाँ से अपन कितना आएंगे, ठीक है। मान लो इसको 5 पे रखता हूँ, ठीक है। तो कहाँ तक आएगा, ये 6 तक आएगा, ठीक है। तो इसको है थोड़ा सा आगे ले आता हूँ मैं। वैसे यहाँ भी आ जाओ, थोड़ा सा आगे लेके आ जाओ, दिस इज़ यहाँ तक में। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ ज्वाइन कर लो, इसको यहाँ से लेकर के इसको आप यहाँ तक का ज्वाइन कर लो। ज्वाइन हो गया। अब इसको जो हम क्या करेंगे, एक मिनट, स्केल को, यस, इसको जो है यहाँ से यहाँ तक इसको आप ज्वाइन कर लो। अब क्या करना, इसको जो है यहाँ से यहाँ तक इसको आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो आपको ये वर्टिकल लाइन है, ये अपना क्या है बेस का लाइन है, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों लाइन्स मीट करते वहाँ पर अपना क्या बनता है, क्लाइन बनता है। अब चूंकि ये बन चुका है तो हम क्या करेंगे, जो पार्ट बचा हुआ उसी को अपन यहाँ पे डार्क करेंगे। तो देखो यहाँ से ये अपना डार्क होगा, यहाँ से ये अपना डार्क होगा, ये अपना बन चुका है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना जो पार्ट है अपना डार्क होगा, बस बन चुका है आपका। ये देखो, इसको आप सामने रख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका फ्रंट व्यू, आपका टॉप व्यू, आपका साइड व्यू, देखो आपका बन के तैयार है, ठीक है। तो आई होप आपको This series on isometric views, and so this figure in front of you is basically the front view and top view of an object, or popularly known as the orthographic projection. So what we're going to do is we'll convert this into a 3D view or an isometric view. Okay, an isometric view is something which is drawn using a true scale, and here you're going to see that length, breadth and height, all of them are along 3 different axes. All of them are equal to inclined at
120 degrees each. Okay, so initially let us figure out how much this length is, how much breadth is, and how much the height is. So you can clearly see that the length over here is 75 millimeters, the breadth is 50 millimeters. So what we're going to do is we'll create a base of 75 by 50 millimeters. Okay, and for that I need to draw a line, simply a horizontal line. Okay, well, that's it. And then through this line, somewhere around the center of this line, I'll have a 75 mm long line at an angle of 30 degrees with respect to this space. Same stuff has to repeat it this side also. So this is going to be the y-axis, you can say, and this over here is going to be 50 millimeters. Again, the angle has to be again 30 degrees with respect to baseline. All right. Okay, that's it. So we have this over here. This is let me show you how much this actually is. This is equivalent to 75 millimeters, and this over here is what you call 50 millimeters. All right. So the next step that is supposed to be done is you need to draw a parallel line exactly from this point over here. Okay, so please follow the steps. Keep your drafters along this line, tighten the screw, move to this point, draw a line. Okay, same stuff but this also, drafters along this line, then move along this line towards this point.